Motion in 2D. Okay. नहीं 2D नहीं हुआ. Motion in 2D. Motion in 2D. Projectile motion भी आता. Motion in 2D में नहीं. Projectile में सब आते. Inclined projectiles, oblique projectiles, horizontal projectiles, ये सब आते हैं. खैर वो projectile motion में आता. दूसरा बहुत important part है circular motion भी 2D में आता. Circular motion. Online, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we already saw motion in 1D and we dealt with two kinds of motions. One was uniform and one was non-uniform. Yes, sir. In uniform, we applied 4 equations. One was v equals u plus at. The second was s equal to ut plus half at square, and third was v square minus u square equals to 2s. There was one more which gave you an expression for the distance traveled by a particle in nth second, which was u plus a n minus half into t. Okay, so we use these equations. So for uniform motion, for non-uniform, what did we do? We used integration to find the answers. Okay, and we also saw how to deal with graphs of position time, graphs of velocity time, graphs of acceleration time. Okay, and we know what the slope of a graph is. Derivative, slope is a derivative. So for position time graph, the derivative gives you, or the slope gives you velocity. For velocity time graph, slope gives you acceleration. And we also saw area under the curve in acceleration time graph gives you change in velocity. And for velocity time graph, the area under the graph gives you change in position, which is displacement. Change in position is displacement. Now we will be dealing with motion in 2 dimensions. Motion in 2 dimensions. So we in motion in 1D we also saw vertical projectiles, right? Yes, sir. And in vertical projectiles, this was ground, okay? And from ground we were projecting some body, some particle, okay? With some initial velocity u. With some initial velocity u. So we wrote equations for some of the parameters, okay? So if we project this body with initial velocity u in the upward direction, and acceleration due to gravity is always downwards, okay? So we wrote the expression for time of ascent. Time of ascent was how much? Tell me. What was time of ascent? 2u by g. Time of ascent was? Tell me again. 2u by g. No, it was u by g. Time of ascent. Oh, yes. U by g. Time of ascent was u by g. And time of descent was also u by g. Yes. And time of flight was time of ascent plus time of descent, which was 2u by g. Clear? Yes, We sir. also saw that the maximum height reached by the particle capital Sir? H was सर आपने टाइम ऑफ डिसेंट u स्क्वायर लिख दिया. time of descent. u स्क्वायर लिखा है ना. Okay. Maximum height was u square by 2g. Maximum height, correct? So Yes, these were the parameters that we found out. So it will go upward and it will come down. Okay. So this is the upward journey, and downward journey will be along the same line, but just to represent, I am writing it on the side. Clear? So it is actually in the same line. So this is return journey. Clear? Now, one more thing, we also saw that if you release an object from height h, if you released an object from height h, or if you drop an object from height h, we saw that, see, this was height h,
and you are releasing one object from that height. So you are releasing one particle from that height. So what did you learn about that? If you are releasing a particle from height h, huh? Velocity on reaching ground. Velocity on reaching ground is root 2gh, right? And time of descent is root 2h by g. Root 2h by g. Now, how did you get these all? Get these expressions? You use these formulas. Which formulas? V equals to u plus at. Yeah, these three formulas you use. V equals to u plus at. S equals ut plus half at square. Half 80 square. And v square minus u square equals 2as. 2s. Now, why is it allowed to use these three equations in? How do you know that it is uniform motion? Acceleration of freely falling bodies close to the surface of Earth is constant. Close to the surface of Earth. If you go very far from Earth, then it will vary. You'll learn that in gravitation. Okay, clear? Now, in this chapter, we will be dealing with projectiles which are not projected vertically but at some other angle other than 90 degrees to horizontal. Now watch carefully. This is the horizontal surface. What do you mean by horizontal? Horizontal direction is any direction which is perpendicular to gravitation. Okay, that is horizontal. Now I am projecting a projectile with some velocity, initial velocity u. Watch carefully. And that direction is making theta with horizontal. It is making theta with horizontal. Now in this chapter, if it doesn't say anything in the problem, by default, theta is the velocity or theta is the angle that initial velocity makes with horizontal. So this is theta. This is u. Do you agree? Right? Yes, sir. Now, if you use your common sense, the particle will take some path which looks little something like this. Do you agree? Something like this. This will be the trajectory, this yellow path. This is the trajectory. Trajectory means what? The path followed by the particle. Particle. So it will be something like this. This you can just guess it. Okay? Okay. Something like this. Now, in this chapter, we will be mathematically describing this path and we will be writing expressions for various parameters. Okay? Now, what I will do, I know one thing that acceleration due to gravity is in this direction, right? Clear? Yes, So sir. it is in vertical direction. Now what I will do is I'll divide. I'll make this as y-axis. I'll make this as y-axis. Okay. I'll make this as y-axis. And the horizontal line as x-axis. Okay. Can you see that? Now, can you tell me what is ay? Acceleration in y direction, it is minus g, right? Can you tell me what is ax? 0. Why? Because there is no force in the horizontal direction for a projectile when it is moving in. Okay. It is in moving vertical direction. Okay. So ax is 0. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. मैं ay minus g लेता हूँ. Always I'll take downward as negative, upward as positive. कौन सा लेने की जरूरत नहीं? नहीं, माइनस नीचे के माइनस ऊपर के प्लस लो, राइट के प्लस लेफ्ट के माइनस लो. सर, हाँ, -10 नहीं ले सकते? माइनस जी ले लो. अब जी में जो भी डालना है डाल सकते. क्लियर? ओके सर. तो ए वाई क्या है? माइनस जी. ए वाई क्या है? माइनस जी.
और ax क्या है 0. Now both are constant. Both are constant. These things don't change with time. That means in vertical direction also we have uniform motion. In horizontal direction also we have uniform motion. That means our equations of motion are valid in both horizontal and vertical direction. Correct? So first I will take horizontal direction. And see what happens. First I will write equation for displacement. So for displacement, what is the equation? S equals to ut plus half at ut plus half at half at square. But in x direction, s is nothing but x. S is nothing but x. So x equals to, what will you get? Okay. Now before doing the problem, I have to take the components of u in horizontal and vertical direction. So this will be how much? This will be u cos theta. U cos theta. This will be u sin theta. Yes, sir. Because we saw this in vectors recently. Yes, sir. The component which is, touching theta is always cos theta, and the component that doesn't is sin theta. Okay, so these are called rectangular components. So here can I write, before proceeding this, can I write ux is u cos theta and uy is U sin theta. u sin theta. Clear? So I have written expression for ux and uy also. So here I'll write one extra step, ux plus half ax t square, correct? Yes, sir. Implies x equals to u cos theta t minus half g. No, it is 0, right? Ax is 0. So this is just x equals to u cos theta into t. You got expression for X. Displacement in horizontal direction, and displacement itself is position. Now let me look at vertical direction. So for vertical direction, what will you get? Same equation you use, s equals to ut plus half at square. So what will you get? S equals to D plus half at so square. in vertical direction, s is y, and here I'll get u sin theta into t minus half gt square, correct? So you got one expression for y and you got one expression for x. So this is x and this is y. Clear? Okay. So I'll write one more step. Wait. Yes. I'll write one more step. Y सर equals वो to हाफ से पहले प्लस हो जाता ना. plus half ay t square. Correct? Clear? So you'll get this. बोलो. कुछ डाउट है? कुछ क्लियर हो गया सर. Clear? क्लियर हो गया. यस सर. एक मिनट. These are called parametric equations. Okay? These two equations are called parametric equations. Which two equations? X is a function of time and y is a function of time. So these are called parametric equations. So this and this. What do you mean by parametric? They are changing with a parameter, and what that parameter is here? It's time. Okay?
So these are called parametric equations. Now, here the parameter is time. Now, parameter is time. Now, you can relate how you can see what the relation between y and x is if you eliminate t. If you eliminate t, okay. So you will get equation between x and y, which will be the equation of path of the trajectory. Okay. So eliminating t to relate x and y, or y with x, y with x. Clear? So the most simplest way here to eliminate t is take t from the first equation and substitute that t in second equation. So in first equation, what will you get? T equals to x by u cos theta. Hmm. Okay. Implies what will you get? Y equals to, bolo, minus half okay. Hmm. Now you can just leave it as it is, or you can just simplify it little bit. You'll get y equals to u will cancel. There will be u here also. Okay. So you'll get x tan theta minus half g by u square cos square Cos theta square into theta. x square. Clear? So in fact, I'll write okay, clear? So this is in the form of y is equal to minus bx square. Now anything in this form is equation of a parabola that you will learn later. Actually, only maths people will learn in their coordinate geometry in conic sections. Okay. So this is equation of a parabola. Clear? Now we'll come to this equation later. This equation will be equation of a parabola only. Okay. So how the shape of parabola is, I'll show you. So here y equals to, I'll take a as what? 1 I'll take, b also 1 I'll take. So I'll get x minus x square. X minus x squared I'm taking. Okay. So I'll get some graph like something like this. Okay. So I'll go to settings graphics. So I'll get a graph something like this. Okay. So it will start here and it will fall. Okay. So this equation is actually equation of a parabola. The shape is a parabola. Now, in fact, you cannot just look at the graph and directly say whether it is a parabola or hyperbola. Okay, I'll tell you what the difference between parabola and hyperbola is. If you zoom out and see the asymptotes of parabola, can you see the asymptotes of parabola? Asymptotes means what? Very far away. If you look at the arms of this, two arms are there, na? They will get parallel to each other. They'll get parallel to each other. That means if I draw tangent to the arms of the parabola, those two tangents will be parallel to each other. Can you see? These two hands are parallel to each other almost. Clear? Yes, Almost sir. parallel to each other. So that is how a parabola is. So this is your parabola. I have zoomed out lot to show you. Now, how will a hyperbola be? Hyperbola will be something like this. Y equals to 1 divided by x. So hyperbola will be something like this. The
the asymptotes of hyperbola, that means if you look at the arms of the hyperbola, where they are going very far at infinity, if you draw tangent there, they will not be parallel, they will meet at one point. In fact, these are meeting the asymptotes. The asymptotes of this hyperbola are x-axis and y-axis. Can you see? Asymptotes of this parabola are x-axis and y-axis. In fact, these are meeting at right angle. That's why this is called rectangular hyperbola. This is called rectangular hyperbola. Okay. Anyway, let us see about this. Okay. Now, this is equation of a parabola, and the trajectory of the oblique projectile is a parabola. Clear? Now, I'll go back to this situation, and I will try to find certain parameters here. Okay. Now, if you compare this with a vertical projectile, the only difference, see how much horizontally it is going is not a concern when you are calculating time of ascent and time of descent. For time of ascent, how much time is it taking to go up? For time of descent, how much time is it taking to come down? For time of flight, the time of going up plus time of coming down. So for this, for this vertical motion up and down, we are not worried about the horizontal parameter. Okay, we are worried only about the vertical parameter. So here, vertical component of velocity is what? Vertical component of velocity is what? Of initial velocity. Tell me. Online, are you listening? Yes, sir. Is u sine theta, right? So this is what? Uy. This is uy. Clear? Now, what is time of ascent? Tell me according to this. Time of ascent. It will be u sine theta by g. Because I am not worried about how much it is going on the horizontal direction. So u cos theta is none of my business here. So it is u sine theta by g. What will be time of descent? U sine theta by g. So according to this, can you tell me what will be the time of flight? Time of flight is 2u sine theta by g. Time of flight is 2u sine theta by g. So I hope you understood the logic behind all this. Simple. Instead of u, we are taking u sine theta because that is what the vertical component is. Clear? Online, are you following? Yes, sir. Yes, sir. So what will be the maximum height according to this logic? Maximum height will be, instead of u square by 2g, what will you get? U square sin square theta By 2g. Clear? by Oh, sir. Clear? U square sin square theta by 2g. Clear? Okay? Clear? This is the maximum height. This is the time of flight. This is the time of ascent. This is the time of descent. Now, how to calculate the range? How to calculate the range? So what is range? Range is the horizontal distance traveled by the projectile in its entire flight. Okay? So this is the range. Can you see that? So this is the range. From here to here. Clear? This is the range. So I'll call it R. Now, in horizontal motion, there is no acceleration, right? So we know that x is equal to ux into t. Ux into t. Ux into t because ax is 0. Ax is 0, right? For range, it will travel its entire time of flight. For range, it will travel its entire time of flight.
So what will be range equal to? Ux into time of flight. Do you agree? Okay, this also you got. Now you know what Ux is. You know what Ux is. Ux is u cos theta because that is a horizontal component. Into time of flight you just found out 2u sin theta by g. Now you know that, so r equals to, I'll take u square 2u square 2 sin theta cos theta by g. Clear? So according to this, what is range? Tell me. Sin 2 theta by g. You know, because 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Okay, in the starting we learned this. Okay, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. When a is equal to b is equal to theta, it will be sin theta cos theta plus cos theta sin theta, which is what? 2 sin theta cos theta. So sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Clear? So this is the expression for range. Okay? Clear? Okay. Now I can calculate all this in an alternate way also, because I know the expression for trajectory is y equals to what? So I'll just copy this. I'll just copy this. I'll just copy this. So I have this function y as a function of x. Y as a function of x. Now tell me, for finding range, I have to find distance between point of projection and point at which it will hit the ground. Correct? So I'll draw this again. You see. So this is the ground. And suppose this is origin. Suppose this is origin. And trajectory is something like this. Clear? Trajectory is something like this. Now tell me, what is range? Range is the distance between these 2 points, right? It is the distance between these 2 points. This is range. Now if I get roots of this equation, distance between the roots is the range, right? So when will you get roots of an equation? This is x, this is y. When y equals to 0, right? See, y equal to 0 is here. Y equals 0 is here. Can you see that? Y equal to 0 कहाँ पे है? X axis है ना, ये है y equal to 0. Right? So if I write y equals to 0, what will I get? X tan theta. बोलो. X tan theta minus half g by u square cos square theta into x square equal to 0, right? So according to this, if you take x common, what will you get? Tan theta minus g by 2u square cos square theta into x equals to 0. So one solution is x equal to 0, and the other solution is what? Another solution is tan theta minus g by 2u square cos square theta into x equal to 0.
So what is x equal to according to the second equation? Implies this is or x equals to 2u square cos square theta into tan theta by g. Correct? So look at this. What will you get? X equals to, if you simplify, u square cos square theta into sin theta by cos theta. So it will be sin theta into cos theta only again by g. Clear? So you got the same thing, right? So what is x equal to? U square sin 2 theta by g. So what is the distance between this and 0? It will be this only, right? Clear? Are you understanding? ये है, ठीक है? ये एक है, x equal to 0 एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है? U square sin theta by g. So what is the distance between those 2 points? These 2 points. It is range. So I'll call it x2. I'll call it x1. Okay. So range equals to x2 minus x1, which is equal to u square sin 2 theta by g. Clear? So we got this expression again. Clear? Now using that equation, I can also find maximum height also. I can use this equation and find maximum height also. How? How to find maximum height? How to find maximum height? Maxima of a function. Its derivative is 0. See, y is some function of x, right? Which is tan theta into x minus half. Bolo. G by theta into x square, right? Now, we have maxima when derivative is 0 or minima when derivative is 0. Why? Because at maxima and minima slope will be 0. Derivative is nothing but slope. So what is dy by dx? Which is equal to f dash of x. Tan theta is a constant. We are not taking derivative with respect to theta. We are taking with derivative with respect to x. So it will be tan theta minus, because derivative of x is how much? 1 g by u square cos square theta into 2x. Correct? In fact, you will get half of range. X is equal to half of range as expected. Okay. So what will you get? This must be equal to 0, right? For maxima. Correct? What will you get? Tan theta minus 2.5 will cancel. What will you get? G by u square theta into x equals to 0, implies x equals to half of range आता. X equals to u square cos square theta into tan theta is sin theta cos theta, because one cos theta will cancel. So only 2 is missing here. It is actually half of range. Correct? So maxima is at x equal to u square by g, which is also equal to r by 2. Okay. Now I will substitute this x. I'll substitute this x here to get y, because that will be maximum height, right? So y of x
इक्वल टू ये है, क्या है ये, बराबर, दिस इज y of x, right? This is y of x. So what will be y of r by 2? I have to substitute that r by 2, right? So what will I get? Tan theta into u square sin theta cos theta by g minus half. Okay, I'll write below. There is no space. Okay, minus half g by u square cos square theta into u power 4 sin square theta cos square theta, square na, x square है ना, by g square, correct? So in fact, if you see this y of r by 2, you will get u square, see, u square sin square theta by g you will get, because one cos theta and cos theta from tan will cancel. Okay, because tan theta is what, sin theta by cos theta, right? This cos theta and cos theta will cancel. Sin theta into sin theta is sin square theta minus half of, same thing you'll get again, because one u square and u power 4 will cancel. You get u square here, one cos square theta and cos square theta will cancel, sin square theta will remain, correct? What is that? U square by g. So this is 1 minus half is half. So y of r by 2 is u square sin square theta by 2g. Clear? I derived this not because we don't have the formula, just for practice. We already derived in an easy way, but I'm saying you can derive it in this way also. Find the maxima, where the maxima is, then substitute where that maxima is, then you'll get that maxima value, maximum value. Clear? Okay? Online following? Yes, sir. Okay. Now let us look at the Yes, sir. look at some problems relating to these questions. Okay. Suppose one more claim I will make. H is maximum for what angle? For what angle? So first write down the formula. What is H equal to? U square sin square theta by g. Okay. Now for a given u, you are not changing, u is fixed. Okay. For a given you are not changing, you can only change theta. So by 2g. So H will have maximum value when sin theta will have maximum value, right? So when is sin theta maximum? When sin theta is maximum, if theta is equal to 90 degrees. Clear? So H is maximum. H has maximum value when theta is 90 degrees. Clear? When theta is 90 degrees, and that maximum value is what? Maximum value is what? H max क्या रहता? U square by 2g. Don't get confused. H itself is maximum height, but we are talking about maximum height being maximum at which angle? Okay, capital H खुद maximum height है, but वो maximum height की value maximum कब होती? ठीक है? कौन से angle पे होती? ठीक है? So don't get confused. Clear? Now, next question. R will be maximum for what range? R will be maximum for what theta? For what theta? If u is fixed. Clear? So first write the formula, expression for R.
It is u square sine 2 theta, right? Yes. By g. Now r will be maximum if sine theta is maximum, correct? Yes, sir. R will be maximum. Tell me. Theta should be 45. R is max when sine 2 theta is max. Sine 2 theta is max. And tell me what is the maximum value of sine 2 theta? Maximum value of sine 2 theta is 1. It is when in brackets you have 90 degrees, correct? Whenever you have, okay, so it happens if it's 1 when 2 theta is 90 degrees, correct? Clear? So what can I write? 2 theta equals to 90 degrees, right? Implies theta equals to 45 degrees. Clear? Now remember, if you want to throw a stone farthest from the place where you are standing, you should throw it at 45 degrees. If you throw it at angle greater than 45 degrees also, it won't go very far. If you throw it some steeper angle, lower angle like 30 degrees also, it will not go far. You have to throw it at 45 degrees. Clear? One more thing. Range for complementary angles is equal. Range for complementary angles is equal. What do you mean by complementary angles? Sum of angles is angles is 90 degrees. Agreed? Give me examples of complementary angles. 30 degrees and 60 degrees. 10 degrees and 80 degrees. 15 degrees and 75 degrees. Not 60 and 70. 30 degrees. Huh? 60 and 30 degrees also. 30 and 60 and 60 and 30 is same. Okay. We got this pair, right? Okay, those pairs will repeat, of course. But either way, the order is not important. You can take in, any order. 30 and 60 is same as 60 and 30. There are many others, infinite combinations you'll get. Okay, 1 and 89 degrees is also complementary only. Okay, so 1 degree and Yes. 89 degrees. What else? Okay, anything, anything. 44 and 46 degrees. All these are sets of complementary angles, right? Clear? Yes. 45 is also. That is also correct only. Okay? 45 and 45 is also correct. 45 degrees and 45 degrees. Clear? Now, why is range equal? Tell me. Why is range equal? What is the reason for range being equal? I'll write the formula for range. So, theta and 90 minus theta. These two are complementary angles. Okay? Theta and 90 minus theta. Now, for theta, what will be the range? I'll call it R1. It will be u square sine 2 theta by g. For this, it will be R2 is equal to 2 of 90 minus theta by g. But if you look carefully, R1 and R2 will be equal, because what is R2 equal to? U square sine 180 minus 2 theta will get, right? If you open the brackets by
G. But what is that equal to? 180 minus theta is sin theta. 180 minus 2 theta is sin 2 theta by. Clear? So if you look at this and this, both are same. So for complementary angles, ranges are equal. Okay, so what can I conclude here? R1 equals to R2. Okay, R2. means for 30 and 60 you'll get the same range. For 10 and 80 you'll get the same range. Clear? For clear? So in fact, okay. ओके फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्रीज का है, ठीक है, और ये पिंक वाले क्या है, एक 60 डिग्रीज का है और एक 30 डिग्रीज का है. एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं. एंड येलो इट विल बी से 10 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज. क्लियर? बात समझ में आई? तो क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहता और मैक्सिमम रेंज कब रहता? 45 डिग्री से था. क्लियर? आर यू फॉलोइंग? ऑनलाइन कैन यू फॉलो? Yes, sir. क्या बोले? हाँ, क्लियर ना? Now I'll give you one problem. You do. For what angle of projection range equals to maximum height? For what angle of projection range equals maximum height? So whatever is said in the question you write down. क्या बोला? R equals to maximum height बोल दिया. Substitute करो. U square clear? So U square cancel, G भी cancel, तो 2 बच जाता नीचे. But you write sin 2 theta as 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta equals to sin square theta by 2 by 2. Clear? तो ये सॉल्व करो, कंप्लीट करो. दो सॉल्यूशंस आते, ठीक है. कैंसिल मत करो, sin थीटा कॉमन लो. sin थीटा इक्वल टू 0 का.
साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्या आता 2 cos थीटा माइनस करो बाद में भी कर सकते इक्वल्स टू 0 अभी भी कर सकते पहले भी कर सकते हैं अभी भी कर सकते। दो सॉल्यूशंस आते एक sin थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 4 इससे tan थीटा इक्वल टू 4 आता ये इक्वल टू 0 था ठीक है so that means थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एक सॉल्यूशन है और एक थीटा इक्वल्स टू tan inverse of 4 now the thing is रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल दोनों केसेस में रहते थीटा इक्वल टू 0 जब रहता जब भी रेंज और ये इक्वल रहते मगर 0 0 रहते दोनों ठीक है हियर रेंज इज 0 रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 0 यहाँ पे रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इक्वल टू नॉन जीरो आता कैलकुलेट कर ले सकते हैं मगर जरूरत नहीं है होना है तो करो करेंगे क्या आता ओके इफ बोलो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज बोलो is u then r equal to h equal to क्या आता u square sin square theta by 2g भी आता और क्या आता रेंज का भी लगा u square 2 sin theta cos theta by g भी आता दोनों इक्वल आते चेक कर लो कैसा इक्वल आते tan theta equal to 4 करो क्या करते tan theta equal to 4 so I am drawing the triangle I am taking this angle as theta okay tan theta 4 मतलब क्या opposite side 4 adjacent side 1 ये साइड क्या हो जाता अंडर रूट 17 following online Yes, sir. Yes. now you can write sin theta and cos theta from here tell me what is sin theta 4 by 1 4 by root 17 17 and what is cos theta 1 by root 17 1 by root 17 now you use these values and substitute in the formula of range and maximum height both will be equal so tell me what will be range equal to u square 2 sin theta is 4 by root 17 into 1 by root 17 by g so I think it will be about 8u square by 17g by 17g you got this now you use the formula for maximum height is how much u square sin square theta by 2g so it will be u square sin square theta is how much it will be 16 by 17 right 16 by 17 by 2g so here the same thing h equal to u square into 8 by 17g you get the same thing clear okay right next question for two complementary angles
range was R. Range was R. Equal रहता ना complementary angles को, हाँ? But their maximum heights were different, right? Maximum heights were different रहते ना, इसलिए मैं बोलता हूँ H1 and H2. Clear? Find the relationship between R, H1 and H2. Find the relationship between R, H1 and H2. Now see, in question except R, H1 and H2, nothing is given. Neither U is given, nor theta is given, but we have to assume. Okay? Let U be velocity of launch. R equals to U square. Okay, sin 2 theta by G है ना, वो भी लिखेंगे, which is equal to U square 2 sin theta cos theta by G, right? Leave it as it is. Whatever is given, you have to write. Somehow you will get the solution later. So what is H1? U square sin square theta by 2G. What will be H2? No, it is complementary angle, na? U square sin square by 2G. But what is sin 90 minus theta? Cos theta. So what is H2 equal to? Clear? Now I have H1, H2, and somehow I have to find the relationship between R, H1 and H2. Now I can clearly see that there is sin theta here, cos theta here. There is sin theta here, cos theta here. Theta is not given in question. I have to eliminate that. So how to eliminate? See, if I square this and divide by the product of H1, H2, sin square theta and cos square theta will go. Clear? So what is R square equal to? 4 U square, U power 4, 4 U power 4, sin square theta, cos square theta by G square. Correct? So I can rewrite this as R square equals to I want H1 and H2, right? So there is no 2 and 2 in denominator. So I will wantedly multiply and divide by 4G square. Now I can write it as, product of two heights. Are you understanding? So R square is equal to 16 into U square sin square theta by 2G into U square cos square theta by 2G. Now you understood why I multiplied and divided by 4? Because I wanted that 4 in the denominator. Okay? So what is R square equal to? R square is equal to 16 into H1 into H2. R equals to 4 root H1 H2. Clear? Okay. बात समझ में आ गई? Clear? Yes, sir. बहुत सारे रहते क्वेश्चन, 100 से ज्यादा रहते इसमें. इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं रहता क्वेश्चन, समझे?
इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं रहता, अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहता। आर इक्वल टू 45 डिग्रीज में क्या रहता? हाँ 45 डिग्रीज में एच और आर का रेशियो क्या रहता बोल रहे? इजी है ना। इफ फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज फाइंड एच बाई आर बोल रहे ना, आर बाई एच बोल रहे, कुछ भी चलता, आर बाई एच सब्स्टिट्यूट करो आ जाता। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाय जी बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g। क्लियर? 4:1 आता। कैसा? ये यू स्क्वायर चले गया, जी चले गया। क्लियर? तो साइन स्क्वायर 45 क्या है? 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो वो भी 1/2 आता, 2 ऊपर आ जाता, राइट? तो क्या होता? आर बाई एच इज इक्वल टू, तो आर इक्वल्स टू 4h आ जाता इनफैक्ट। क्लियर? इजी है ना? ओके नेक्स्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इनफैक्ट कुछ भी करके ला ले सकते हैं आंसर फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आंसर, बट एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट। तो एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है? कोई भी इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाइल, एनी पॉइंट एनीवेयर रैंडम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, कहीं भी ले लो, एंड join that point with the initial point and final point. Okay, initial point and final point, you will get some triangle like this. Okay, ये जो एंगल है इधर साइड, ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. So this angle is alpha, Yes, sir. this angle is alpha, and this angle is beta, this angle. Okay, ये जो ट्रायंगल के जो एंगल्स है अल्फा एंड बीटा है, क्लियर, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है? नाउ he will ask you this, क्या पूछता? If the angle of projection is theta, prove that. If the angle of projection is theta, angle of projection कहाँ है बताओ? ये बीटा है। If angle of projection यहाँ पे है, देखो ये वाला, ये है थीटा। बात समझ में आई? ये थीटा है। प्रूव दैट tan alpha plus tan beta is equal to tan theta. Tan alpha plus tan beta is equal to tan theta. I hope correct है वो क्वेश्चन, याद नहीं है मेरे को, I think correct है, ठीक है? तो प्रूव दैट, क्या बोल रहा? इक्वल टू tan theta, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है क्वेश्चन कुछ, ठीक है? प्रूव दैट tan alpha plus tan beta equals to tan theta, ये क्वेश्चन है, ठीक है? इनफैक्ट एग्जाम में कैसा आता, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट बोलता, cot alpha plus cot beta is equal to cot theta देता है, और एक sin alpha plus sin beta is equal to sin theta देता, समझ गए? यानी तो एक tan alpha into tan beta is equal to tan theta देता, एक्चुअली वही छूंगा, tan alpha into tan beta is equal to tan theta, याद नहीं है मेरे को, let us see, I think it is, सर्च करो भाई, आ गया? tan alpha plus tan beta is equal to tan theta है, या tan alpha tan beta is equal to tan theta है? क्या है? दो प्लस है,
प्लस ए। ओके, तो इसका प्रूफ कैसा है, मतलब प्रूफ कैसा करते, तो इसका कुछ ऐसा है प्रूफ। देखो हम लोगों को जो इक्वेशन पहले ट्रैजेक्टरी का देखे थे वो याद रहना, वो क्या है, नहीं y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये याद रहना, ठीक है। हम लोग इससे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम फिर से ले लिया। नाउ सी केयरफुली, आई विल ड्रॉ ए लाइन हियर, ये येलो कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, नाउ कैन यू सी दैट दिस इज x, ये x है, और ये क्या होता बोलो, गेस करो, ये वाला r माइनस एक्स, कैन यू सी दैट, और ये वाला, ये दूसरे कलर में लिखेंगे, ये होता y, ये होता y, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो है ना, क्या होता, कोई भी पॉइंट ट्रैजेक्टरी पे x कमा y होता ना, तो वो येलो लाइन x हो जाती, क्योंकि ओरिजिन से x राइट पे है वो, और पॉइंट ऊपर x एक्सिस से y पे है, तो वो पॉइंट x कमा y हो गया। बात समझ में आई? ओके, कैन यू राइट tan अल्फा हियर, बोलो tan अल्फा इज y by x, what is tan beta, y by r माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? ये तो क्लियर है, दिख रहा ना? ओके, अब इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू ये इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन को देखो थोड़ा, इसमें कैन आई राइट y इक्वल्स टू, अगर tan थीटा कॉमन ले लिया मैं, ठीक है, व्हाट विल आई गेट, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय minus gx square 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, राइट। g भी आता सर ऊपर जी भी आता। बात समझ में आ गई? कुछ मिसिंग है यहाँ पे, बराबर है? ओके, तो y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू, अगर x कॉमन ले लिया मैं बाहर, x कॉमन ले लिया, अरे tan थीटा बाहर ले लिया ना मैं, ओके ओके ओके, ठीक है, एक और स्टेप करेंगे, इधर x ऐसे ही रखो, माइनस हाँ, नीचे क्या आता, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आता, समझ में आया? करेक्ट, बाई जी आता इंटू एक्स स्क्वायर आता। बात समझ में आई? बट वो एक्सप्रेशन कुछ फेमिलियर दिख रहा है आपको? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी क्या होता? ये आर का रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा, 1/r होता ना ये, तो ये क्या होता, y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाय आर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर। कुछ मिसिंग है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स बाहर ले लो, क्या आता, 1 minus gx whatever
r माइनस एक्स बाई आर आता, आ गया? तो tan थीटा इक्वल टू क्या आता बोलो? tan थीटा इक्वल टू, देखो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स इंटू r बाई क्या होता? y बाई एक्स क्या होता? नहीं होता tan थीटा y बाई एक्स, tan अल्फा होता। समझ गए? मगर r बाई आर माइनस एक्स कुछ नहीं होता, r बाई आर माइनस एक्स कुछ नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ट्रिक यूज करता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को थोड़ा मुश्किल दिखता, मगर एक्चुअली एक चैप्टर रहता पार्शियल फ्रैक्शंस बोल के, सुने कभी? पार्शियल फ्रैक्शंस, भाई एमपीसी वाले कोई भी नहीं? पार्शियल फ्रैक्शंस बोल के नहीं सुने स्कूल में? तो अच्छा, व्हाट इज tan अल्फा? y बाई एक्स। tan बीटा क्या है? y बाई आर माइनस एक्स, है नहीं है? y बाई आर माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, y को ऐसे ही लिखता हूँ, देखो ऊपर r बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स हो जाता, हो गया, इज इक्वल टू tan थीटा, दिख रहा? अब मेरे को मेरा आंसर दिख रहा है नहीं यहाँ पे? दिख रहा? tan अल्फा प्लस tan बीटा आई जैसा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना? tan अल्फा प्लस tan बीटा दिख रहा नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि y है और ये क्या की है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो y इक्वल्स टू, एक ट्रिक, छोटा ट्रिक यूज करता हूँ, कुछ नहीं है। इधर मैं क्या करता हूँ, r माइनस एक्स प्लस एक्स कर देता हूँ, चलता? वही आता ना, r ही आता ना, बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स, क्लियर? इंटू वाई इंटू वाई इक्वल्स टू tan थीटा। आ गया? अब आ गया, देखो आंसर ऑलमोस्ट वही है। यहाँ पे अगर सेपरेट कर दिया मैं, r माइनस एक्स बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स कर दिया, इज इक्वल टू tan थीटा। आ गया? देखने में बड़ा है मगर कुछ भी नहीं है। हाँ Excuse me, sir. हाँ, We have botany class. okay, 1 minute, this problem is over. So this is 1 by x minus 1 by r minus x equals to tan theta. So what will you get? Y by x? हाँ डालिए, तो क्या आता? बोलो भाई। y by x प्लस 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 y by क्या आ गया? ओके, ये पूरे प्रॉब्लम में बस यहां से यहाँ कैसा है वो थोड़ा सोच के आना, बाकी का इजी है, ठीक है। स्प्लिट नहीं करे, इंटेंशनली माइनस एक्स प्लस एक्स करे, ठीक है? ठीक है ना? ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रॉब्लम्स तो बहुत है मगर उससे पहले थियरी भी बहुत है, ठीक है। और क्या क्या है प्रोजेक्टाइल मोशंस में? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन ऑब्लिक प्लेन है, मतलब ऑब्लिक प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल के बदले अगर कुछ
स्लोप रहा तो कैसा करना वो देखते हैं। और क्या देखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का कैसा रहता, वेलोसिटी वेक्टर कैसा चेंज होते रहता। ठीक है, जैसा जैसा ऊपर जा रहे वैसा वैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा चेंज होता है। क्लियर? क्या बोले? y का कंपोनेंट कम होते रहता, x का कंपोनेंट सेम रहता, ux u cos थीटा ही रहता, uy क्या रहता, u sin थीटा माइनस gt होता। बात समझ में? हेलो, हाँ नो है, नो 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 नो, ठीक है ठीक है, हाँ क्या बोले, सी टाइप। So can we leave? Yeah, yes, yes. We'll continue tomorrow, okay? Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Lightning का Thank you.
मत बैठो उधर जाओ, उधर उधर बैठो, इधर बैठो, इधर फेस करो, इधर फेस करके बैठो, उधर नहीं देखना, राइट, इधर फेस करके बैठो, उधर बैठो जी बेंच पे, इधर फेस करके, इधर इधर, हाँ बैठ जाओ, हाँ उधर नहीं देखना, ठीक है, लाइट में आँख खराब होती। ओके, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ एंगल थीटा से, सच दैट थीटा इज एंगल विद इंक्लाइन प्लेन, यू का इंक्लाइन प्लेन से एंगल है ये, ठीक है। बात समझ में आई ना? तो ये थीटा है, जो जी रहता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके दो कंपोनेंट्स निकालना अभी, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये जी है अगर, तो ये क्या होता, जी कॉस अल्फा, कैसा मालूम ये अल्फा होता बोल के, क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, और वो येलो वाला जो है ना, ये येलो वाला कंपोनेंट जो है वो किससे किससे रहता, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर रहता, किससे रहता, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर रहता है। तो उन दोनों के बीच में एंगल अल्फा रहे तो इन दोनों के बीच में भी एंगल अल्फा होता, ठीक है। तो ये जी कॉस अल्फा होता और ये जी साइन अल्फा होता, इधर क्लियर। यू के भी दो कंपोनेंट्स है, यू के along the plane और perpendicular to the plane, बोलो ये क्या होता, u cos थीटा, u इस बार थीटा लेना क्योंकि एंगल थीटा है, और u sin थीटा कौन सा होता बोलो, ये होता, ये क्या होता, u sin थीटा। क्लियर, ओके। मैक्सिमम हाइट कैसा फाइंड करते, मैक्सिमम हाइट मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट नहीं होता एक्चुअली, क्या होता, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, वो ये होता, क्या होता, ये वाला ये होता, समझ गए, इसको एच मैक्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये एच मैक्स जो है ना फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और रेंज क्या है यहाँ पे, ये रेंज है, दिख रहा, ये दो फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों फाइंड करना है, ठीक है ना। ये बराबर है, नहीं दिख रहा मेरे को, परपेंडिकुलर दिख रहा, ये अब दिख रहा परपेंडिकुलर, ये होता रेंज, ठीक है।
कैसा फाइंड करते बोलो अभी, रेंज और मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में क्या होता? u स्क्वायर बाय 2g। अपना जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हुआ ना। यहाँ पे क्या होता मालूम? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा। क्योंकि उधर बात समझ में आई? देखो होना है तो पूरा डिटेल में डिराइव कर सकते हैं, मगर मैं ट्रिक से बोल रहा हूँ। वही तो h मैक्स क्या बोल सकते हैं? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g cos अल्फा। बात समझ में आई? ओके, h आ गया। हाँ 2g ठीक है, क्लियर? ये आ गया। तो अब मेरे को बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता? 2u बाई जी रहता वर्टिकल में। अपने को 2u साइन थीटा बाई जी था, तो अब क्या आता? 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। क्योंकि अब नीचे की तरफ जी कॉस अल्फा है, समझ गए? ओके ठीक है। अब जितनी टाइम ऑफ फ्लाइट है, जब तक जो है ना उन्हें उसके फ्लाइट में रहता, तो रेंज मालूम कर सकते हैं। मगर रेंज मालूम करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s इज इक्वल टू रेंज हो जाता, u क्या होता? u cos थीटा होता रेंज के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता बोलो? एक्सेलरेशन है नहीं है? है, जी साइन अल्फा है। इनफैक्ट माइनस जी साइन अल्फा है, माइनस जी साइन अल्फा है, समझ गए? तो माइनस हाफ बोलो जी साइन अल्फा। हाँ ऊपर ये हॉरिजॉन्टल का ये ले रहे, ये डायरेक्शन में ले रहे ना, तो u cos थीटा के अगेंस्ट है ना इन, तो इस वास्ते माइनस जी साइन अल्फा लेना पड़ता, बराबर इंटू टी स्क्वायर 2u साइन थीटा बाय होल स्क्वायर, बराबर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आता? r इक्वल्स टू कॉमन क्या क्या आता देखो, आई थिंक 2u स्क्वायर कॉमन आता, साइन थीटा भी कॉमन आता, बाई कॉस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा भी कॉमन आता। यहाँ क्या था? बचता क्या? कॉस थीटा बाई, बस कॉस थीटा ही बचता और कुछ भी नहीं बचता। कॉस थीटा माइनस, यहाँ क्या बचता? एक साइन थीटा बचता, एक साइन अल्फा बचता बाय कॉस अल्फा एक बचता, क्योंकि स्क्वायर था ना, 2 चले गया, क्योंकि ऊपर क्या था? 4 था, नीचे 2 था, तो 4/2 2 बाहर चले गया, बराबर। तो रेंज क्या आता बोलो? 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, बराबर। तो ये क्या होता बोलो? r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा आता हो, बराबर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये याद रहना, इनफैक्ट इजी है, क्योंकि देखो रेंज का फॉर्मूला जब अल्फा 0 होता क्या है? रेंज का फॉर्मूला, इफ अल्फा इज 0 r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, सेम आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर कंफ्यूजन हो रहा कुछ, तो चेक कर लो क्या अल्फा इज इक्वल टू 0 डाल के।
एक चीज याद रखो, नीचे cos स्क्वायर अल्फा आता कैसा भी, ऊपर एक sin थीटा एक cos थीटा प्लस अल्फा आता, तो ये cos थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला है, तो याद रखो cos थीटा प्लस अल्फा तो आता, याद रहता है क्योंकि ऐसा आया था बोल के डेरिवेशन में, तो cos थीटा प्लस अल्फा आता, और अल्फा इज इक्वल टू 0 हुआ तो sin थीटा आना है, तो sin थीटा भी आता, नीचे का g cos स्क्वायर अल्फा याद रख लो खाली। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज along the inclined plane, अगर उसका बीटा रहा तो, सॉरी अल्फा रहा तो, और हम लोग जो है ना थीटा से विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन एंगल फेंके, बात समझ में आई? क्लियर? तो ये हो गया क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, बराबर। एक और छोटी चीज है प्रोजेक्टाइल्स के बारे में, प्रोजेक्टाइल्स का जो एंगल रहता और वेलोसिटी वेक्टर जो रहता वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता, क्या होता? कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बराबर है टेढ़ा है, ये बराबर है, ये बराबर है, क्या? वेलोसिटी वेक्टर बराबर है, ये बराबर है। ओके एनीवे, तो ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, दिख रहा? ठीक है, इसके पहले कंपोनेंट्स क्या रहते बोलो? थोड़ा छोटा ड्रॉ करेंगे, बहुत बड़ा हो गया, बोलो। ये एक है, ये एक है, दिख रहा? तो ये येलो वाला कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा यही रहता, बराबर। बात समझ में आई ना? क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। मगर जो क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन कंटिन्यूअसली चेंज होता, बात समझ में आ गई ना? अब वो एंगल भी चेंज करता, किसका? वेक्टर का एंगल भी चेंज करता, समझ गए? वेक्टर का एंगल भी चेंज होता, क्यों? इन छोटा होते जाता ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होते जाता, ये और छोटा हो गया, इधर इधर और छोटा हो गया, इधर और छोटा हो गया, उधर तो जीरो ही हो जाता, बराबर, इधर तो जीरो हो जाता, क्लियर? तो रिजल्टेंट वेक्टर का देखो डायरेक्शन कैसा दिख रहा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखो कैसा दिख रहा, मतलब एंगल छोटा होते जा रहा है ना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाता, समझ गए? ये और ऐसा हो जाता, और ऊपर तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, बराबर। तो वो जो एंगल कर रहा, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये जो एंगल कर रहा, वो जो एंगल है उसको अल्फा बोल के रिप्रेजेंट करते, कैसा रिप्रेजेंट करते? अल्फा। वो फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, ये थीटा हो गया, बराबर। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता, बोलो बोलो? tan थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय ओके, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू
ऑपोजिट साइड क्या होता? u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा इनफैक्ट आप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं. कैसा लिख सकते हैं मालूम? वेलोसिटी वेक्टर u bar इज इक्वल टू u cos थीटा I कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप. ये आपका वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. ओके तो u का डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, u के डायरेक्शन की. ठीक है क्या? व्हाट एंगल डज u मेक विथ वर्टिकल की बात कर रहा हूं. तो आपको ये एक्सप्रेशन आता जो मैं लिखा ऊपर. ठीक है ये वाला. क्लियर? ओके तो एक चीज गौर करो यहाँ पे. अगर मैं t इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड डाला तो क्या होता एंगल? गेस करो खाली. टाइम ऑफ एसेंड डाले तो क्या होता है एंगल वेलोसिटी का? एसेंड बोल तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहता ना, तो जीरो आता. नहीं कम तो होता कैसा भी. हाँ जीरो होता. क्यों बोलो? फॉर t इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड विच इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g. क्या आता बोलो? बोलो. तो एनीवे क्या आता अपने को? जीरो ही जाता. कैसा मालूम? यू साइन थीटा कैंसिल हो गए, थीटा इक्वल टू जीरो आता. क्लियर? टाइम ऑफ डिसेंट पे क्या आता? गेस करो एंगल. हाँ माइनस थीटा आता. क्यों? जैसा ऊपर से गया वैसा नीचे आता ना उन्हें. ऐसा दिख रहा? क्या होता? माइनस थीटा आता. आंसर क्या आता? हाँ तो कैसा आता? प्रूफ देखो. tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई. u sin थीटा माइनस g इंटू 2u sin थीटा. हाँ फ्लाइट बोलो. बाय तो बोलो क्या था? tan थीटा इक्वल्स टू माइनस u sin थीटा भाई जी. अरे भाई जी क्यों लिख रहा हूँ जी मैं जब से? भाई u cos थीटा है ना भाई. हाँ वो करेक्ट है. ये u cos थीटा है. तो क्या था? माइनस साइन थीटा बाय माइनस u sin थीटा बाय u cos थीटा बराबर. तो क्या आया? अच्छा ये tan थीटा का ही को लिख रहा हूँ भाई मैं जब से. tan अल्फा लिखना है ना. tan अल्फा क्योंकि थीटा इक्वल टू अल्फा नहीं होता ना. अल्फा यहाँ पे क्या लिखना है? अल्फा बोलो. माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा. तो क्या होता है? इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा. क्लियर? ओके तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. और भी है टॉपिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़े.
वो खत्म कर लेंगे, चलो फिर क्या बोलते हैं, वो खत्म कर लेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोशन इन 2D में वो भी आता है, क्लियर भाई। वो मीटिंग एंड कर दो, ये मैं भेज देता हूँ।